Tarini, I really believe that all of you are really healthy and preparing well for upcoming NABARD Grade A Phase 1 exam. So guys, we all know that the NABARD Phase 1 exam admit cards are already out. So I really believe कि आप सभी ने अपनी preparation को एक next level पर आप अभी तक ले गए होंगे, ठीक है? And when we talk about the NABARD Grade A Phase 1 exam, guys, then this session that we are taking today is really very helpful for all of you, because today we are back with a top 50 MCQ session from the August month 2022. And guys, this is the part 4 of this particular top 50 MCQ series for the month of August 2022. So we are already done with the first 3 parts. If you have not watched them, then kindly watch them after this particular session. ठीक है जी? Apart from that, in this particular session, I am going to discuss the top 50 MCQs from the general awareness, and these are very important for the RBI Grade B, NABARD Grade A as well as SEBI Grade A exam. But for now, guys, we all know that NABARD Grade A is on 7th of September. ठीक है? तो यहाँ पर ये सेशन आज का आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो गुड मॉर्निंग राठौड़, रश्मि, थारिनी, नीलेश. आई रियली बिलीव कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. ठीक है guys, so now before beginning this particular session, if you are new to your YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And you can also join our Telegram channel to get the access to the PDF of these sessions. To join the Telegram channel, what you are required to do, you are required to click on the link given in the description. Okay guys, so I think that we can begin this particular session. So guys, first of all, a very small instruction before beginning this session, that this particular session is basically, you all know that this is the revision session for the fast track sessions that we have covered in the past 1 week. ठीक है जी? Apart from that, when you will be answering the question, you are just required to type the question number and then the option that you think it is the right answer. And you are also required to calculate your scores, because I am going to ask you your scores after the end of the session. ठीक है जी? So I really believe that now we are ready to move on to the session, and here is the very first question on your screen. So guys, the very first question is on the Palan 1000 national campaign and the parenting app which was launched recently. तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने recently ये Palan 1000 national campaign को launch किया है, and the parenting app which was launched, and you are required to tell me कि कौन सी स्टेट के अंदर इसको launch किया गया है. So guys, the question number 1 is here on your screen. The Palan 1000 national campaign and parenting app, which is basically focusing on the first 1000 days of parenting of a child. ठीक है? जहां पर they are going to focus on their cognitive, mental, physical health, and that is what is really very important for these first 1000 days of the parenthood of these particular children. ठीक है? So guys, the very first question, and I am getting the right answers from the people, and here absolutely right guys, the right answer is option E, that is Maharashtra. So this Palan 1000 national campaign was basically launched in Mumbai, Maharashtra, which focuses on the cognitive development of the children in the first 1000 days. So here the people who are basically opting option A, that is Uttar Pradesh, guys, this is not the right part. The right answer to the question is basically option E, that is Maharashtra. A very important question guys. ठीक है? ये हमारा बहुत ही ज़्यादा important question है, and that is why it is really very important to be covered. Moving on to the next question. So the next question is, which of the following districts has become the first India's first fully functional literate district? So हम हमेशा पढ़ते हैं, काफ़ी reports आती हैं literacy के ऊपर. We have report on ACER, we have report from the NGO प्रथम. ठीक है? तो इसी तरीके से यहाँ पर जब हम बात करते हैं लिटरेट डिस्ट्रिक्ट्स की, तो इंडिया का पहला फुली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट क्या है उसका नाम? दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. So here people are saying that Mandala is the right answer to the question. Absolutely right guys. Mandala, which is in Madhya Pradesh, it is basically dominated by tribal people, and here that is why this is really a very important achievement which is being taken by this particular district, which is Mandala in Madhya Pradesh. Very well done guys. Shalini, Harkamal, Preeti, Nilesh, everybody has answered the question correctly. So let's move on to the next question, and the next question is on the Tiranga fixed deposit scheme. See guys, this question is really going to be a rapid fire session. ठीक है? So I want fast answers from all of you. जल्दी आंसर कीजिए, क्योंकि you are required to use your time very efficiently in the exam, और ये session is the best manner in order to get into the speed and get into that particular next level which is really going to help in the exam.
तो यहां पर जब हम बात करते हैं तिरंगा फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की, सो ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया था? हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने लॉन्च किया था बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम। सो यहां पर जब भी कोई बैंक आता है, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, आपको यहां पर ध्यान रखना है कि उस बैंक के सीईओ का क्या नाम है, उसकी टैगलाइन क्या है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक अबाउट द सीईओ ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा, इट इज बेसिकली संजीव चड्ढा जी, ठीक है जी। तो यहां पर आपको हमेशा याद रखना है कि उस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, उसकी टैगलाइन क्या है। दीज आर द थिंग्स दैट आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू कवर, ठीक है। तो यहां पर हमने पढ़ा इसके बारे में। तो अब मुझे जल्दी बताइए कि पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। सी दिस इज अ रिविजन एंड यहां पर आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ का क्या नाम है गाइस? So here absolutely right guys, the right answer is Atul Kumar Goyal, who is presently the MD and CEO of Punjab National Bank. तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपने questions को करना है, और whenever you are finding such kind of additional part in the question, always try to seek out the extra information, क्योंकि ऐसे questions exam में पूछे जाते हैं, ठीक है। So very well done guys. Shubhu Singh, your question framing is awesome. Thank you Shubhu. So hats off to our team. And now moving on to the next question. So the next question is on the MOU. I always tell you whenever there is an MOU, there are some parties जिनके बीच में वो MOU sign हुआ है, and apart from that there is one particular aim जिसके लिए ये पर्टिकुलर MOU साइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है बेसिकली कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अल्टीमेट सैलरी पैकेज प्रोवाइड करने के लिए इसमें से कौन से बैंक के साथ MOU साइन किया है। इज इट एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक और RBL बैंक? सो आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स, एब्सोल्युटली राइट गाइस, द राइट आंसर इज एक्सिस बैंक। सो अब एक्सिस बैंक के सीईओ का क्या नाम है? Once again there is a bank in the news, so quickly tell me that what exactly is the name of the CEO of Axis Bank. Let's see who will answer me the right answer to this question. Axis Bank के CEO का क्या नाम है? See, Axis Bank has signed an MOU with the Food Corporation of India to provide ultimate salary packages. So when I talk about the name of the person who is presently serving as a CEO, it is basically Amitabh Chaudhary. तो आपको ये सभी इंफॉर्मेशंस एग्जाम के लिए याद रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज हैज इशूड न्यू रूल्स रिस्ट्रिक्टिंग द लोन रिकवरी एजेंट्स फ्रॉम हैरासिंग द बोरोवर्स एंड कॉलिंग देम बिफोर 8 AM एंड आफ्टर 7 PM? So guys, what exactly is the name of the entity which has recently issued such kind of rules which are related to the loan recovery agents? और कौन सी ऐसी एंटिटी है जो ऐसे रूल्स निकाल सकती है? बेसिकली इट विल बी द वन दैट विल बेसिकली रेगुलेटिंग द बैंक्स, और बैंक्स को रेगुलेट करने की जो पावर है वो किसके पास है इंडिया के अंदर? दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। So Monica, Harkamal, Sadhana, Megha, Arun, everybody has answered the question correctly. That is Reserve Bank of India. So guys, Reserve Bank of India has basically issued such kind of rules because they were observing that these loan recovery agents are deviating from its instructions, और इसीलिए ताकि borrowers को हरास न किया जा सके किसी भी मैनर में, वेदर इट इज मेंटल और फिजिकल, कोई भी इनअप्रोप्रिएट मैसेज ना भेजा जाए। दैट इज द रीजन दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कम अप विद सच काइंड ऑफ न्यू रूल्स, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं। सी, अमिताभ चौधरी वाज डिक्लेयर्ड द हाईएस्ट पेड एमडी एंड सीईओ। तो वो कौन से बैंक से रिलेटेड है? एब्सोल्युटली वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, दैट इज ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी जी, जो कि who has already been declared as the highest paid bank MD and CEO in India, ठीक है। So option C is the right answer to the question number 6. Let's move on to the next question. So the next question, you are required to tell me that which one of the following states has recently launched the Lucky Bill app. तो Lucky Bill app को कौन से स्टेट ने recently लॉन्च किया है? See, this is the bill which is being launched by the state to basically stop the GST evasion, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है उस स्टेट का नाम जो इस लकी बिल ऐप को लेकर आया है? एंड हियर गाइस, एब्सोल्युटली राइट, द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज केरला।
एंड हियर यू कैन सी यहाँ पर ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये भी आपको पढ़नी है। पर्पस क्या है लकी बिल ऐप का, दैट इज टू कर्ब जीएसटी इवेजन बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव प्राइसेस टू द यूजर्स। उसको डेवलप किसने किया है, दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ केरला। डिजाइन किया है डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लकी बिल ऐप को लॉन्च किस स्टेट ने किया है, दैट इज केरला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is on the bilateral exercise that is उदार शक्ति। तो ये इंडिया और कौन सी कंट्री के एयरफोर्स के बीच में हुआ है? रिसेंटली इट वाज हेल्ड उदार शक्ति एक्सरसाइज, बायलैटरल एक्सरसाइज है, इन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया और साथ में कौन सी कंट्री के एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी हियर टू द क्वेश्चन नंबर 8 एंड गाइस एब्सोल्युटली राइट, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मलेशिया। तो मलेशिया के साथ यहाँ पर इंडिया ने ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, ठीक है। वेरी वेल डन। हरकमल, मोनिका, साधना, नीतू, पुरुषोत्तम, कुमकुम, आइकन, everybody is rocking today. I'm really glad to see this. Let's move on to the next question, guys. So the next question is, with which of the following has signed an MOU with which of the following entity to finance 700 joint liability groups? J&K ग्रामीण बैंक ने recently एक MOU साइन किया है टू फाइनेंस 700 जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स। तो उनकी प्रॉपर फाइनेंसिंग हो सके तो उसके लिए कौन सी एंटिटी के साथ ये पर्टिकुलर लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी हियर। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, इज इट नाबार्ड, RBI, SEBI, NHB और नीति आयोग? सो हियर in order to do this, the entity to finance the 700 joint liability groups, it is basically the right answer to the question is option A, that is NABARD. ठीक है guys, so NABARD is the right answer to this particular question. It is going to provide promotional grant support of rupees 4,000 per joint liability group to Jammu and Kashmir Grameen Bank, a very very important part, ठीक है। और recently we all know कि NABARD का एग्जाम 7 सितंबर को है guys, फेज 1 एग्जाम। तो यहाँ पर NABARD से रिलेटेड जितनी भी न्यूज हैं आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उस पर से कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल वुमेन? So whenever you are covering any kind of foreign country कभी भी किसी न्यूज आर्टिकल में आती है, ऑलवेज ट्राई टू कवर कि उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, उसके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का क्या नाम है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बिकम अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो जो हम बात करते हैं द नेम ऑफ द कंट्री विच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल वुमेन, सो दैट इज बेसिकली स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर एक्ट साइन किया है, दैट इज पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री प्रोविजन एक्ट 2021। तो जो हम बात करते हैं स्कॉटलैंड की कैपिटल की, it is Edinburgh, and when we talk about the currency of the Scotland, it is pound sterling. So these are the important dimensions that you are required to always remember when you are covering these particular news articles from the exam point of view, ठीक है जी। तो I really believe कि सभी को ये चीज क्लियर है। Let's move on to the next question. So now the next question is on a portal that is India's first portal to arrested narco offenders that was launched, और उसका नाम है निदान। So whenever you find such kind of acronyms, always remember कि उसकी full form क्या थी, ठीक है जी। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट। सो दिस पोर्टल इज बेसिकली इंडियाज फर्स्ट पोर्टल, एंड यहां पर ये किसके लिए लॉन्च किया है, दैट इज ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, जिसका नाम है निदान। सो व्हाट एग्जैक्टली डी स्टैंड्स फॉर इन दिस निदान? So absolutely right guys, the right answer to the question is option B, that is database. So Nidan here stands for National Integrated Database on Arrested Narco Offenders, ठीक है। It is a part of the Narcotic Coordination Mechanism portal which is launched by the Narcotics Control Bureau, ठीक है। So this is the right answer to this question. Moving on to the next question. So now recently a platform led by the Office of Principal Scientific Advisor was launched for research and innovation, ठीक है। तो एक रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म? सो सी गाइस, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू आर रियली रिक्वायर्ड टू रिमेंबर हियर। तो मुझे जल्दी जल्दी बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर। द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म which has been led by the Office of the Principal Scientific Advisor, and absolutely right, people are saying that option C is the right answer. Well done guys, the right answer is Manthan. पर्पस क्या है उसका? टू एम्पावर ऑल द स्फीयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद इन इंडिया, और इसको पावर कौन कर रहा है? दैट इज NSEIT लिमिटेड, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द वर्ल्ड संस्कृत डे 2022।
सो आपको मुझे बताना है कि वेन एवर देयर इज अ इंपॉर्टेंट डे, आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डेट एंड थीम. So this question is basically on the dimension of the date. So World Sanskrit Day कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? That is August 12. ठीक है. So August 12 को World Sanskrit Day is being celebrated every year, and that is what you are really required to remember from here. Absolutely right, Sadhana, Dolly, Rashmi, Ritu, Preeti, Nilesh, you are really rocking guys today. So now the next question is on the World Humanitarian Day. So आपको मुझे बताना है कि World Humanitarian Day once again कौन सी डेट को मनाया जाता है? World Humanitarian Day, see this is a very important day. It is being celebrated by United Nations. तो क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे. एंड गाइस हियर द राइट आंसर इज अगस्त 19, जिस दिन हम इसको लॉन्च करते हैं, जिस दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. और इस साल का जो कैंपेन है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के लिए, दैट इज इट टेक्स अ विलेज. ठीक है. सो दिस इज द कैंपेन फॉर दिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे फॉर द ईयर 2022, celebrated on 19th of August. Moving on to the next question, and the next question is on the World Photography Day, which was celebrated. Now this question is on another dimension, that is कि उसकी थीम क्या है. So मुझे क्विकली बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर that what exactly is the theme of the World Photography Day, which was recently celebrated on August 19, 2022. So guys, quickly tell me what is the right answer to this question. This is basically on the World Photography Day, and here the right answer is pandemic lockdown through the lens. तो यहां पर सी हमने यहां पर काफी इंपॉर्टेंट डेज याद किए. ठीक है. तो इसी के साथ मैं आपको कुछ और रिवीजन कराता हूं जो हमने पहले किया था. वर्ल्ड लॉयन डे और साथ में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे. तो वर्ल्ड लॉयन डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये दोनों ही सेलिब्रेट किए जाते हैं 10th of August को. ठीक है. तो यहां पर ऐसे जितने भी हैं गाइस आपके लिए रियली वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अपीयरिंग इन द नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम, क्योंकि वहां पर ये क्वेश्चंस आर वेरी प्रोबेबल टू बी आस्क्ड. तो इसी के साथ एक और है गाइस, दैट इज खेला होबे दिवस. तो खेला होबे दिवस यहां पर कौन सी स्टेट करती है सेलिब्रेट? दैट इज वेस्ट बंगाल. और वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है? दैट इज 16th of August. तो 16th of August को हम सेलिब्रेट करते हैं खेलो होबे दिवस, वेस्ट बंगाल उसको सेलिब्रेट करती है. वर्ल्ड लॉयन डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 10th of August को. आई रियली बिलीव कि सभी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर है. एब्सोल्युटली. Moving on to the next question, and the next question is on which of the following states become the first Har Ghar Jal certified state? A very important part guys, first Har Ghar Jal, जिसके अंदर we are basically ensuring that no one is left out and everybody is having the access to the potable water. ठीक है. तो यहां पर एक पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर आप सभी को मिलने वाला है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, विच इज अ पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन. तो कौन सी वो स्टेट है जो कि बनी है इंडिया की पहली हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट? एब्सोल्युटली राइट गाइस, द राइट आंसर इज गोवा. दैट इज ऑप्शन ई, गोवा. और जब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो यूनियन टेरिटरी है दैट इज दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, व्हिच हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आई एम मार्किंग द स्टार हियर. जल जीवन मिशन के अंदर फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट, दैट इज गोवा. अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Moving on to the next question. This is once again a very important question. I am marking the star here. The question is, इसमें से कौन सी state है which has become the first Indian state to use blockchain technology for the seed distribution? We all know कि blockchain जो है, this is really a very emerging technology. उसका काफी वाइडली यूज किया जा रहा है इन द डिफरेंट एरियाज. तो यहाँ पर वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज बेसिकली यूज दिस टेक्नोलॉजी एंड इट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट द सीड्स बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. और यहाँ पर जब आप नाबार्ड के लिए पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइस हियर द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली झारखंड. सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर. Very well done guys. The right answer is Jharkhand. So it will be implemented by Jharkhand Directorate of Agriculture and Settlement. So now moving on to the next question. So the next question we are required to tell me that which of the following forces has signed an MOU with the IRCTC to ensure safety and security of booking data under the e-ticket service of IRCTC. So we all know जो e-ticket service है IRCTC की, जहां से हम टिकट्स बुक करते हैं, तो वहां पर जो हमारा बुकिंग डेटा है उसको सिक्योर किया जाए, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसके लिए इसमें से कौन सी फोर्सेस हैं जिसने कि ये MOU साइन किया है IRCTC के साथ? So guys, this is basically the force which is basically headed by पंकज सिंह. ठीक है जी, who is the Director General. So यहाँ पर जो हमारे पंकज कुमार सिंह है, he is the Director General of that force and
That particular force is basically border security force. That is the right answer to this question. So BSF is the right answer to this particular question. ठीक है? So option B is the right answer. Moving on to the next question. The next question is on the autobiography which was recently launched, and the name of that autobiography is Madam Sir, the story of Bihar's first lady IPS officer. ठीक है जी. तो जब भी कोई बुक लॉन्च होती है, कोई ऑटोबायोग्राफी लॉन्च होती है, दो चीजें आपको याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस बुक का नाम क्या है, ठीक है, देन ऑथर कौन है, और उसके बाद वो पर्सन जिसके ऊपर वो ऑटोबायोग्राफी, जिसकी वो ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है जी. तो यहां पर एज अ नेम यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट इट इज एन ऑटोबायोग्राफी. तो यहां पर ये कौन है इसके ऑथर? द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ई, दैट इज मंजारी जारूहर. ठीक है, जिन्होंने अपने ऊपर ये बुक लिखी है. शी वाज द फर्स्ट lady IPS officer from the Indian state of Bihar, and that is why it is really very important from the exam point of view. Moving on to the next question. So next question है, which of the following entities has issued new guidelines for the alternative investment funds and venture capital funds for making investment abroad? तो यहाँ पर कौन सी ये एंटिटी है जिसने इशू की है नई गाइडलाइंस फॉर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड द वेंचर कैपिटल फंड्स? सो लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली हियर. Question number 20. Is it IRDI, RBI, SEBI, PFRD, or Ministry of Commerce and Industry? So people are saying option C is the right answer. That is SEBI. Absolutely right, guys. When Securities Exchange Board of India is in the news, तो मुझे जल्दी बताइए कि उसके चेयरमैन का नाम क्या है? Who is presently the chairman of the Securities Exchange Board of India? So see, whenever you are finding such kind of news articles, जो ऐसी bodies को आप देखते हो न्यूज के अंदर, उसके चेयरमैन कौन है, where this body is headquartered at, these are the really very important things that you should remember. And when I talk about the chairman, it is माधवी पुरी बुच. ठीक है जी. Sorry if my pronunciation is wrong in this part. ठीक है, absolutely right, guys. The right answer is this. So right answer to the question number 20 is option C. Moving on to the next question. So Dash has signed MOU with 8 banks to provide customized banking service for employees. So once again one of the forces has signed an MOU, और ये MOU साइन किया गया है 8 बैंकों के साथ to provide customized banking services. अपने एम्प्लॉइज को customized banking service provide की जा सके, तो इसके लिए इस पर्टिकुलर फोर्स ने ये MOU साइन किया है. And what is the right answer to this question, guys? Absolutely इंडियन कोस्ट गार्ड. तो सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, इंडियन कोस्ट गार्ड. और यहाँ पर जो बैंक्स हैं उनका नाम आपको मेंशन है. ठीक है जी. Everything is clear to all of you. Moving on to the next question. The next question, you are required to tell me the name of the insurance company which has launched the campaign that is Play for Our Heroes. तो Play for Our Heroes कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इस कैंपेन को लॉन्च किया है? What is the right answer to this question? Is it LIC, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व? सी, जब भी आपको ऐसे कोई कैंपेन्स दिखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि उसको लॉन्च किसने किया है, किसके लिए लॉन्च किया गया है. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बेनिफिशियरी कौन है, किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या नाम है उस कैंपेन का, किसने लॉन्च किया है. दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग. एंड एब्सोल्युटली राइट, आई एम गेटिंग द राइट आंसर, दैट इज एगॉन लाइफ इंश्योरेंस. सो यहाँ पर मोनिका, नीलेश, साधना, डॉली, मेघा, Harsh, Shalini, everybody has answered the question correctly. That is option D. That is Aegon Life Insurance. ठीक है जी. Moving on to the next question. Now you are required to tell me the name of the bank जिन्होंने recently एक नई term deposit scheme launch की है. That is KBL अमृत समृद्धि. A very easy question, guys. This is the हलवा question. अगर आपने हल्का सा भी पढ़ा है इसको, and you can decode it from the question itself. It says KBL, that is Karnataka Bank Limited. ठीक है, and that is absolutely the right answer to this question. That is option C, which is the right answer to the question which has come up with the new term deposit scheme which is named as the KBL Amrit Samriddhi. So guys, now moving on to the next question. The next question is, you are required to tell me the name of the state जिसने यहाँ पर MOU साइन की है CPRI के साथ to construct a regional testing laboratory. तो regional testing laboratory की कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी स्टेट ने MOU साइन किया है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ? Quickly tell me what is the right answer to this question. Is it Karnataka, Maharashtra, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh? So let's see who will answer the question correctly here. So here I'm getting the right answers. Absolutely right, guys. The right answer is Chhattisgarh. So to construct the regional testing laboratory at Atal Nagar, Nava Raipur in Chhattisgarh, the CPRI के साथ ये MOU साइन किया गया है, and this is what you are required to tell me. Absolutely right, guys. Everybody has answered the question correctly. Now tell me कि इंडिया का पहला कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज यहाँ पर
कहां पर इसको लॉन्च किया गया है, विच इज एट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. सो हियर यू कैन सी हियर नेम ऑफ सम आईएनएसएस आर बीइंग मेंशन्ड हियर. यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी कि इसमें से कौन सा आईएनएस है जहां पर इंडिया का पहला कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज लॉन्च किया गया है. So here guys, the question number 25, the right answer is INS Kern. INS Kern के ऊपर ये इंडिया का पहला composite indoor shooting range launch किया है. What is making this question important? That is India's first, and that is what you are required to remember. ठीक है? I hope this is clear guys. See, whenever you are finding this, that India's first, India's largest, world's largest, highest, तो ऐसे जब भी वर्ड्स आते हैं किसी न्यूज आर्टिकल में, दिस बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन. कि आप भी जब इसको पढ़ेंगे तो ये आपकी अटेंशन अट्रैक्ट करेगा कि भाई इंडिया में कुछ ऐसा पहला हुआ है, इंडिया का कुछ सबसे बड़ा, इंडिया का स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट. तो इसी तरीके से ये ही अटेंशन जो है अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर के भी, एंड दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द एक्सरसाइज. सो इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022. और आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी वो कंट्री है जिसकी एयरफोर्स के साथ इस एक्सरसाइज को यहां पर कंडक्ट किया गया है. सो गाइस क्विकली टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर हियर. Exercise Pitch Black 2022. In the meanwhile, I would like to tell you here that there was an exercise that is Al Najaf 4, which was an Indo-Oman exercise. ठीक है. And when I talk about the exercise Pitch Black 2022, it was basically held between the Air Force of India and Australia. ठीक है जी. अब यहाँ पर आपके लिए छोटा सा होमवर्क है. ठीक है. I am giving you the name of the exercise. आपको मुझे बताना है कि कौन सी कंट्री ने उस एक्सरसाइज को रिसेंटली कंडक्ट किया है. ठीक है जी. एंड द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज इज पेगास 2022. तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आफ्टर द सेशन दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. दैट इज पेगास 2022. कौन सी कंट्री ने इसको रिसेंटली इसमें पार्टिसिपेट किया है, कंडक्ट किया है. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू कोलैबोरेट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टू डेवलप द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कौन सी स्टेट के साथ कोलैबोरेट किया है गाइस. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज अरुणाचल प्रदेश. इसका पोर्टल का काम क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू ट्रैक एंड असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द मंथली बेसिस. तो मंथली बेसिस पर असेस करने वाला है परफॉर्मेंस को डिस्ट्रिक्ट्स की ऑन गवर्नेंस. ठीक है जी. गुड गवर्नेंस हमारी हो सके इसके लिए इस पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सद्भावना दिवस. तो सद्भावना दिवस यहाँ पर कौन सी डेट को मनाया जाता है गाइस? मैं आपको एक छोटी सी हिंट देना चाहूंगा. आई एम गिविंग यू द नेम हु इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर डे, दैट इज सद्भावना दिवस. तो क्विकली टेल मी दैट व्हाट इज द राइट आंसर. आई रियली बिलीव कि अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे करेक्टली इन द कमेंट सेक्शन. सो गाइस क्विकली टेल मी दैट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज द सद्भावना दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. सो हियर पीपल आर सेइंग दैट इट इज absolutely right guys. The right answer is 20th August. So this day basically marks the birth anniversary of the former Prime Minister of India, that is राजीव गांधी जी. ठीक है. तो जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम सद्भावना दिवस सेलिब्रेट करते हैं. वेरी वेल डन. सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2022. सी गाइस दीस आर द रैपिड फायर क्वेश्चन. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है. तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2022 की बात करें तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन August of 20 और उसकी थीम थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ. सो दिस इज द थीम. तो यहां पर हमने पढ़ा उसकी डेट क्या है, दैट इज August 20. उसकी थीम क्या है, दैट हैज बीन मेंशन्ड हियर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ग्रांट किया है जीआई टैग फॉर मखाना. सो बेसिकली ये कौन सी स्टेट का है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी हियर. इट इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और केरला. अ वेरी वेरी इजी आंसर गाइस. यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी कि जीआई टैग यहाँ पर कौन सी स्टेट को दिया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. एंड हियर एब्सोल्युटली राइट, एवरीबॉडी इज गिविंग द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, बिहार. ठीक है जी. सो दिस इज बेसिकली बिहार मिथिला मक्खन. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन which of the following entities has launched phase 2 of the Gramin Udyami project to promote skill development and entrepreneurship among the tribal youth. See, a very very important question. Tribal youth के अंदर
स्किल डेवलपमेंट, जो ट्राइबल यूथ है हमारा, उनकी स्किल डेवलप की जा सके और एंटरप्रेन्योरशिप को वहां पर प्रमोट किया जा सके, उसके लिए जो फेज 2 है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का, उसको लॉन्च किया गया है। तो कौन सी एंटिटी ने लॉन्च किया है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी है। अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, एंड हियर द राइट आंसर इज National Skill Development Corporation, Yuva Vikas Society, and Seva Bharati. So all these particular entities are responsible for launching the phase 2 of Grameen Udyami project. Uska aim kya hai? The aim is to promote the skill development and entrepreneurship among the tribal youth. ठीक है जी? So सभी दे रहे हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब। अभिषेक गुंजावले, इंडियन, शालिनी सिंह, डॉली, थारिनी, पुरुषोत्तम, everybody is rocking today. I'm really glad to see this, guys. Let's move on to the next question. The next question is on रिसेंटली चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नेम चेंज किया गया है। तो कौन से वो फ्रीडम फाइटर है जिनके ऊपर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा जा रहा है, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू टेल मी हियर। द नेम ऑफ दैट इंडियन फ्रीडम फाइटर आफ्टर विच द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी नेम्ड, एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज शहीद भगत सिंह जी। तो जिनके नाम पर अब चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाएगा। ठीक है, वेरी सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? वी ऑल नो आजादी का अमृत महोत्सव, इंडिया इज कोमेमोरेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, और रिसेंटली 15th अगस्त था गाइस। ठीक है, तो यहां पर जब हम वी कैन इजिली रिलेट दिस पर्टिकुलर टर्म्स हियर विद द 15th अगस्त, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी रिकवर्ड। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एलिमिनेटिंग काला अजर। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा है, डिसाइड किया है दैट वी आर गोइंग टू एलिमिनेट काला अजर फ्रॉम द नेशन। बाय विच ईयर दे आर गोइंग टू डू दिस, बाय विच ईयर दे आर एमिंग टू अचीव दिस टारगेट? द राइट आंसर इज 2023। सो काला अजर क्या है गाइस? इट इज अ विसरल इश्मानियासिस। ठीक है जी, इट इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ, यहां पर कुछ सैंड फ्लाइज होती हैं जिनके बाइट से ये पर्टिकुलर डिजीज ट्रांसमिट होती है। एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द काला अजर को एलिमिनेट हम कब तक करेंगे इंडिया के अंदर? दैट इज ईयर 2023, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, moving on to the next question. So next question is on the Badhe Chalo campaign to instill the deeper sense of patriotism among the Indian youth under the Azadi का अमृत महोत्सव। बड़े चलो कैंपेन वाज बीइंग लॉन्च्ड, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी, एंड हियर द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बड़े चलो कैंपेन को लॉन्च किया है टू क्रिएट अ यूथ सेंट्रिक एक्टिवेशन फॉर ग्रेटर आउटरीच ऑफ अमृत महोत्सव। वी ऑल नो आजादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर हम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कोमेमोरेट द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, और उसी के अंडर ये पर्टिकुलर कैंपेन लॉन्च किया गया, दैट इज बड़े चलो, टू इंस्टिल द डीपर सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म अमंग द इंडियन यूथ। ठीक है जी, वेरी वेल डन, ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए जल्दी से कि कौन सी वो एंटिटी है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है आरबीआई का अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। So which of the following entities has joined RBI's, that is Reserve Bank of India's account aggregator system? And guys, here the right answer is Securities Exchange Board of India. Purpose क्या है? ताकि हम boost कर सकें RBI regulated financial data sharing system को. And what exactly will be the result? See, this is going to make the entire trading system, depository system and mutual fund system online. तो जितना भी हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है, डिपॉजिटरी सिस्टम है, म्यूचुअल फंड का सिस्टम है, इस पर्टिकुलर जब ये एंटिटी ने इसको ज्वाइन किया है आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम को, तो ये सारे सिस्टम्स ऑनलाइन हो जाएंगे, एंड दैट इज बेसिकली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द मार्केट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर गाइज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन that as per the recent data which is released by the Reserve Bank of India, Indians remitted dash amount in Q1 of the fiscal 23 under the liberalized remittance scheme. तो liberalized remittance scheme के तहत और आरबीआई ने जो डेटा दिया है उसके तहत इंडिया ने कितना रिमिट किया है अमाउंट, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी हियर। सो क्वेश्चन नंबर 36 एंड आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स फ्रॉम द पीपल हियर, एब्सोल्युटली राइट गाइस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, that is 6.04 billion US dollars is the right answer to the question. तो इसी तरीके के अमाउंट ऑन द recent data they are being asked in the exam. ठीक है, तो ऐसी जो जितने स्कीम्स है इससे रिलेटेड जो डेटा है, फॉर एग्जांपल फ्यू इयर्स बैक देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन नंबर ऑफ द यूपीआई ट्रांजैक्शंस, उसी टाइम जस्ट उसी मंथ के अंदर ये डेटा रिलीज किया गया था, एंड इट बिकेम अ
क्वेश्चन इन द एग्जाम एंड सिमिलरली ये जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के ऊपर है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है इन योर जीए पार्ट एंड दैट इज व्हाई यू आर रियली रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन बीमा भरोसा, ठीक है गाइस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बीमा भरोसा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कौन सी वो एंटिटी है जिसने इसको रिसेंटली लॉन्च किया है, दैट इज बीमा भरोसा। सी गाइस यहाँ पर बात हो रही है बीमा की, दैट मींस इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस रिलेटेड कौन करेगा, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो आईआरडीआई की बात करें अगर हम, तो आईआरडीआई है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जब हम बात करते हैं आईआरडीआई के चेयरपर्सन की, तो आईआरडीआई की चेयरपर्सन कौन है, दैट इज देवाशीष पांडा जी। So Debashish Panda is the right answer to this part. That is IRDAI के chairperson है Debashish Panda और IRDAI is the entity which has launched the Bima Bharosa grievance redressal mechanism. ठीक है guys, I hope that this is very much clear to all of you. Option E is the right answer. Well done. Let's move on to the next question. Who has been appointed as the 10-member United Nations Internet Governance Forum Leadership Panel? You are required to tell me the name of the person who has appointed to the 10-member UN Internet Governance Forum Leadership Panel. And guys, here the right answer is option C, that is Alkesh Sharma, who has been appointed to the 10-member UN Internet Governance Forum Leadership Portal. So that is the right answer to the question number 38. Let's move on to the question number 39. And the next question, you are required to tell me the name of the first Indian to play the UEFA Women's Champions League. Guys, this girl has created history by playing in the Uefa Women's Champions League. And what exactly is making this question more important, that is she is the first Indian to play in the Uefa Women's Champions League. And the right answer to the question is option B, that is Manisha Kalyan, who is from द स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पर स्टेट को याद रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इट कैन बिकम अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन द एग्जाम, ठीक है गाइस। मनीषा कल्याण हु इज फ्रॉम पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन द यूएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NHPC लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग PSUs टू सेट अप अ लार्ज कैपेसिटी सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यहाँ पर सेटअप करने के लिए कौन सी इसमें से ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है NHPC ने? And guys, here the right answer to the question is Bharat Electronics Limited. So Bharat Electronics Limited का MOU साइन हुआ है NHPC Limited के साथ। उसका एम क्या है, टू सेट अप अ लार्ज कैपेसिटी सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is on the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. कौन सी पर्टिकुलर थीम है जिसके अंतर्गत इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है इन ईयर 2022? द डे इज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, दैट इज August 21, 2022. So guys, when I talk about the theme, what exactly the theme was? The theme was option D, that is memories. So memories was the theme for the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. So this is the right answer to the question. Moving on to the next question. So the next question is on International Day commemorating the victims of acts of violence based on the religion or belief that was celebrated on. See guys, here just days only required कि कौन सी डेट को यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया है, दैट इज August 2022, ठीक है जी। सो August 22 is the right answer, that is 22nd August, on which the International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief was being celebrated recently, ठीक है। So everybody has answered the question correctly here. Moving on to the next question. So the next question is, here you are required to tell me the name of the state जहां पर इंडिया की पहली प्राइवेट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। सी गाइस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट हियर, व्हाट इज मेकिंग दिस क्वेश्चन मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी, इंडिया की पहली प्राइवेट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी। और यहाँ पर जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर हम इसको सेटअप करने वाले हैं। दिगांतरा जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, इट इज गोइंग टू एस्टैब्लिश द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी इन गढ़वाल, उत्तराखंड, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच in the recently held 15th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, India ranked dash with the 3 golds and 2 silvers. See, जितने भी major events में India participate करता है उसमें India की position क्या आती है in the medals tally? That is the very important thing that you are required to remember. And when I talk about India's position in the 15th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, it was 3rd. ठीक है, इंडिया की मेडल कंपोजिशन देखी जाए तो इट वाज 3 गोल्ड एंड 2 सिल्वर्स, इट कंप्राइज 3 गोल्ड्स एंड 2 सिल्वर्स, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू remember here. Now guys, moving on to the next question. The next question is, you are required to tell me the name of the state. ठीक है जी, तो कौन सी स्टेट
बेसिकली गोदरेज एग्रोवेट ने एमओयू साइन किया है कुछ इंडियन स्टेट्स के साथ टू प्रमोट पाम ऑयल कल्टीवेशन अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम स्कीम। सी गाइस, जब भी ये स्कीम आती है तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ डायमेंशंस को कवर करना कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये, ठीक है जी, लॉन्च ईयर कब था, तो ये सब चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। उसके फीचर्स क्या हैं, that is very very important from the exam point of view. Now you are going to tell me quickly कि कौन सी स्टेट है जिसके साथ ये MOU साइन किया है गोदरेज एग्रोवेट ने, एंड here guys the right answer is असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इन तीनों स्टेट्स के साथ ये MOU साइन किया गया है एंड दैट इज व्हाट द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पर प्रीति, पूजा, टारगेट विन, डॉली, युधिष्ठर, अर्जुन, महिमा, everybody has answered the question correctly. That is all A, B and C are the right answers. Moving on to the next question. So the next question is, recently NutriHub has inked an MOU with the Akshay Patra to improve the nutritional status of children under which of the following schemes? तो इसमें से कौन सी स्कीम है जिसके अंदर ये MOU साइन हुआ है न्यूट्री हब का अक्षय पत्रा के साथ? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम हियर एंड द राइट आंसर इज पीएम पोषण। सी गाइस, पीएम पोषण व्हिच स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है जी। दिस स्कीम वाज बेसिकली अर्लियर नोन एज मिड डे मील स्कीम, जिसको रीनेम किया गया। और गाइस इसी के तहत सी इस स्कीम की जब हम बात करें तो बेसिकली इट इज प्रोवाइडिंग वन हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, जिसके अंदर हम इसको प्रोवाइड करते हैं एंड दिस विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 2021 2022 टू 2025 26। ये जो टाइम पीरियड है उस स्कीम का नाम क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, उस एक्रोनिम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना बेहद जरूरी है। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि 8 मार्च 2018 को यहां पर पीएम पोषण अभियान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप दैट गाइस दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज साइंड एन एमओयू विद द महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू प्रोवाइड लोन्स फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन किया है महाप्रीत के साथ? So quickly tell me in the comment section guys what is the right answer to this question. The organization which has signed an MOU, and here guys the right answer is IRDA, that is Indian Renewable Energy Development Agency Limited, जिसने ये particular part sign किया है, जिसने इस particular MOU को sign किया है। That is the right answer. So Akash, Nilesh, Arjun, Tharini, everybody has answered the question correctly. That is IRDA. Moving on to the next question. So the next question is on the single entry multiple exit. तो यहां पर आपको मुझे बताना है कि कौन सी स्टेट है जिसने डिसाइड किया है टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप with the idea of single entry and multiple exit. See, a very very important initiative which is being taken here by one of the Indian states. And what is the right answer to this question? First of all, I would like to tell you here that this particular question is from the social sector in India, education. और ये आपके सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, एब्सोल्युटली राइट गाइस, द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है दैट वी आर गोइंग टू डेवलप बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप, जिसका आइडिया है सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, ठीक है जी, वेयर लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ प्रोफेशनल knowledge will be provided to the people which are there at one single place, ठीक है। That is why this is really really very important. Moving on to the next question. The next question is ADB ने recently provide किया है 96.3 million loan to which of the following states to improve water supply and sanitation services? See, we all know that Asian Development Bank always come up with such kind of loans. और यहाँ पर लोन का अमाउंट क्या है, बैंक का नाम क्या है, वो एंटिटी क्या है और स्टेट का नाम क्या है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी डायमेंशंस हमें कवर करनी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द name of the entity which has provided the loan. The amount of the loan is USD 96.3 million. And when I talk about the aim, that is to improve water supply and sanitation services. तो यहाँ पर guys the right answer to the question is option B, that is Himachal Pradesh. When I talk about ADB का chairperson, it is Masatsugu Asakawa, ठीक है जी। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं उसके हेडक्वार्टर की, it is Manila, Philippines. So Manila, Philippines is the place where it is headquartered at. Masatsugu Asakawa is the name of the chairperson of the Asian Development Bank and the name of the state is Himachal Pradesh. Now guys, we are moving toward the last question of our today's session, and here you are required to tell me the name of the bank with which
फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच इन कोझिकोड केरला हैज रिसेंटली लॉन्च। आपको मुझे बताना है उस बैंक का नाम जिसने रिसेंटली अपनी पहली ऑल वुमेन ब्रांच लॉन्च की है इन द कोझिकोड केरला। उसका एम क्या है? टू एनहांस द जेंडर डाइवर्सिटी। सो गाइस वंस अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द जेंडर इश्यूज, इट कैन बिकम अ क्वेश्चन ऑन द बैंकिंग एज वेल। सो नाउ क्विकली टेल मी दैट व्हाट इज योर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। You are required to tell me the name of the Indian bank which has come up with the first all-women branch in Kozhikode, Kerala. And guys, here absolutely right. Everybody has answered the question correctly. That is option A, HDFC Bank. So HDFC Bank is the right answer to this particular question. So guys, I hope that this particular session was really useful and fruitful to all of you. Now this is the time that you are required to tell me what exactly was your score. So quickly tell me your score in the comment section below कि क्या आपका score रहा इस particular session के बारे में, and और आपको ये session कैसा लगा, you can also give your feedback in the comment section as well. So guys, now if you are having any queries, you can just tell me your queries in the comment section as well, and we will be really privileged to answer your queries here. So guys, quickly tell me your scores in the comment section as well as if you are having any kind of queries. Okay, so I am seeing here that that there is not any kind of query here with the people here. So everybody is saying thank you, sir. So thank you guys. It was really good to that you have participated in it, and your participation has really made this session useful. ठीक है जी, I hope that this particular session was really very much useful and fruitful to all of you. And guys, thank you for joining us. Wish you all happy learning.